Hi guys! So if you're new to my channel, then please do not forget to hit that subscribe button and the bell icon next to it so that you are notified of any of my future videos. Hi guys! Welcome to my channel Nukhrewali, and by the title you must be knowing that today we are going to talk about different type of eyeliners. So this is going to be a very informative video, and if you're interested in watching, which I think you are, then please stay tuned and keep on watching. So the first type of liner is gel eyeliners, and they come in basically two forms. First is the jar one and second is in a pencil form. So for the jar one I have music flower gel eyeliners. So this is how it looks. So it comes in a pot, and to apply this you need a brush. So you can either have a angled brush to make a very precise wing eyeliner, or a maybe normal brush, small shader brush. You can use that to apply eyeliners. And the second form is the pencil form, and for that I have this Plum's Nature Studio kajal. Now it says kajal, but this is actually a gel liner in a pencil form. So you need to sharpen it to get the product out every time you have used it. Now preferably इनके बारे में मुझे ये कहना है कि ये बहुत अच्छे ब्रांड्स के जेल आईलाइनर्स हैं, वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है. अगर मैं म्यूजिक फ्लावर जेल लाइनर्स की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. बट अगर आपकी ऑयली आईलिड्स हैं जैसे कि मेरी है, तो आपकी आईज से ये कलर थोड़ा सा आपके क्रीज पे ट्रांसफ़र होता है. मेरे हो जाता है, तो अगर जैसे मैं आंखें बंद करूँगी तो आप वो डिफरेंस देख सकते हैं. Just Studio Kajal भी it is said that this is a very long lasting, but if you have a very oily eyelid, I won't suggest you to go for this one. It does not last really long on your eyelids. जब भी आपको विंग आईलाइनर्स बनाना है तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जेल आईलाइनर्स ही लें और उसे एक एंगल ब्रश की मदद से जेल आईलाइनर को लगाएं. इससे क्या होता है कि सिंस दिस हैज़ अ वेरी स्लांटेड शेप, ये बहुत ईजिली आप प्लेस करके जैसा आपको विंग बनाना है आप बहुत ईजिली से बना सकते हैं. So this was the first type of gel eyeliner which you can get either in a pencil form or in a pot form. Now the second type of eyeliner is actually a sketch pen eyeliner. The second type of eyeliner is this sketch eyeliner, and this is from Yanqina. So I have been using this eyeliner since a really long time, and I really like this. This is very waterproof, smudge proof, long lasting, and if I have to go by the claim, then I think that this can even last for 36 hours. So it is this much good, and the best part about this is that this comes for just ₹50. So you are getting a sketch eyeliner that does all the job it promises, and you are getting it at such a cheap throw price of ₹50. So I guess this is a perfect. And if you're a beginner and you're just starting out, then I would suggest you to go for the pen sketch eyeliner, and this is how this comes in. This is a very pencil type of sketch liner. जैसे आप sketch करते हो वैसे ही आप अपनी easily eyes पे इसको draw कर सकते हो. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा steady hands नहीं चाहिए, तो आप इसको definitely use कर सकते हो. But the only con is कि अगर आपसे गलती से कुछ गलत ड्रॉ हो जाता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मेकअप रिमूवर लेकर ही आप इसको रिमूव कर पाओगे अगर आपने इंस्टेंटली इसको नहीं रिमूव किया तो. बिकॉज दिस इज this gets dry very easily. So yeah, so this is the second type of sketch pen eyeliner, and ये एक दूसरे फॉर्म में भी आता है जार फॉर्म में, और जार में भी फेल टिप टाइप कुछ होता है बॉन्ड, एंड उससे भी आप लगा सकते हो. Unfortunately I don't have it because I think that this one works good for me. So yeah, so if you're a beginner I would suggest you to go for this Yanqina sketch eyeliner. This is really good. The third type of eyeliners are these pencil eyeliners. So I think that these were the first pencils that I actually bought for myself. They were very cheap. I think they were for ₹30 and you were getting two colors, blue and black and red and black. And this is basically a pencil that you can easily use to draw. Again, if you are a beginner, I would suggest
to use this one. This is even better than the Sketch Pen Eyeliner because it is very easy to remove. If you make any mistake, you can very easily, just smudge it and yeah, you will be able to correct your mistake. So उसके लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल हो या जस्ट अभी कॉलेज जाना स्टार्ट ही करा है तो आप ऐसे जो है पेंसिल्स यूज कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ADS. सो आई गेस दैट आपको ये बहुत ईजिली अपने लोकल मार्केट में मिल जाएगा. ऑनलाइन सर्च मत करना क्योंकि ऑनलाइन आई थिंक आपने अगर मेरा सरोजनी ब्लॉग देखा होगा तो ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिलता है, तो आप इसको अपने स्टोर में आसपास ही कहीं खोज लो. नहीं तो सरोजनी नगर में तो ये बिल्कुल सड़क पे ही पड़े रहते हैं फॉर फ्लैट 20, 30, 40, 50 rupees. So you can go for this. This was the third type of liner that you can use. Now the fourth type of eyeliner are actually these liquid eyeliners. इसमें भी आपके दो तरह के liquid liners हो सकते हैं. First is the glossy finish and second is the matte finish. I am not a big fan of glossy finish eyeliners. I want my eyeliners to be matte. So this is from Stay Quirky and this is the Badass Green eyeliner and this is in a glossy finish, and the second one I have is again from Stay Quirky and this is in Badass Blue, but this is a matte eyeliner and I have already done a review on these, so if you have still not watched it I will link it somewhere here. And third one is the very basic black eyeliner which is from the brand Blue Heaven. This again is a very good and affordable eyeliner. I think I even got this for 50 rupees and I have done a complete review on this. So I'm not going to say a lot. I would link it down here again so you can check. So these are the fourth type of eyeliners that you can get in glossy finish or in a matte finish. And अगर आप काजल फेस से ओवर हो चुके हो और आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो गया है तो आप इससे इजीली विंग्स अपनी बना सकते हो. इसमें कोशिश करना कि जो आपकी ब्रश की टिप होती है वो ना ज़्यादा छोटी हो और ना ज़्यादा लंबी हो, अदरवाइज इट वुड गेट वेरी डिफिकल्ट. अगर बहुत लंबी होगी तो आप प्रिसाइज विंग नहीं बना पाओगे, बहुत छोटी होगी तो देयर आर चांसेस कि आप उसे अपनी आईज में पोक कर लोगे. तो ट्राई टू गो फॉर अ मीडियम लेंथ and yeah, you would be good to go. And for the most part of my life I have actually used this Blue Heavens eyeliner and I was able to make really good wings with this. So you just need little practice and you would be a pro. The fifth type of eyeliners are basically these kajals. So I have this one from Maybelline and I have this one from Blue Heaven, and this come in a retractable form like this. So either you can have a retractable kajal or you can have it in a pencil form or maybe in a this kind of shape, but I won't suggest you to go for a kajal like this because what happened is that अगर आपने इसका pointed tip almost use कर लिया है then it gets very difficult to use this. flat हो जाता है तो फिर eyes में आप बिल्कुल लगाओगे तो आप पांडा ही लगोगे. तो try to avoid कि आप ऐसे टाइप की bullets की काजल अवॉइड करो. अब इसको मैं कैसे यूज करती हूँ, आई यूज दिस एज अ लिपस्टिक और मे बी स्मोकी आइज करनी होती है तो इसे मैं यूज कर लेती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा स्मच हो जाता है तो इजी रहता है स्मच करने के लिए. एंड देन वी हैव Maybelline that claims to be 24-hour waterproof, smudge proof, but this is not. ऑयली eyelids हैं आपकी, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपके आइज पे स्टे नहीं करता, बिल्कुल नीचे ट्रांसफर हो जाता है. सो आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ काजल पेंसिल्स. अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आपको मैं फिर भी कहूँगी कि प्लम वाला तो कहता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बट अगर आप ऑयली आईलेट्स है ये भी नहीं करेगा स्टे, बट इसके कंपैरेटिवली ये फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्टे कर जाता है. एंड इसकी बेस्ट थिंग ये है कि ये स्मच नहीं करता. स्मच एज इन ये नीचे ट्रांसफर नहीं होगा, ये जस्ट गायब हो जाता है. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आईज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पता ही नहीं लगता कि आपने कोई काजल लगाया है. ये उस तरीके से डिसअपियर होता है. बट अगर आप ये यूज करते हो तो नीचे आपको पांडा आईज बना देता है. तो दिस इज द रीजन आई डोंट लाइक दिस काजल. एंड दिस वन तो आई डेफिनेटली नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे काजल्स और ऐसे बुलेट वाले काजल्स यूज कर रहे हैं फॉर योर आईज. अगर आपको स्मोकी लुक्स करना है, लिपस्टिक की तरह यूज करना है, यू कैन गो ahead with this one, but not for eyes. I won't suggest this. Now, the sixth type of eyeliners are actually the colored eyeliners,
or colored pencil. So for that I have this LA Girl eyeliner and this is in the shade white. इससे क्या होता है कि आप जब इसे अपनी लोअर लाइंस पे लगाते हो तो आपकी आईज काफ़ी ज़्यादा अवेक लगती है, आप बहुत जागे हुए लगते हो, काफ़ी बड़ी लगती हैं आईज। तो मेरी आईज चूँकि हुडेड है, काफ़ी छोटी है, मैं इसी को प्रेफर करती हूँ कि मैं यूज़ करूँ। डेली लाइफ में काफ़ी सटल लुक आता है। तो इफ़ यू वांट टू सी हाउ दिस लुक्स ऑन माय आईज, so I would again link tutorial where I used this somewhere here, so you can check that. And again आप ऐसा काजल यूज कर सकते हो, otherwise you can go for these colored liners or maybe these type of pencils. तो ये भी बेस्ट होती है for some days when you just want to look very dramatic, आपको boring white and काजल नहीं यूज करना, तो आप ऐसे कलर्स के लिए जा सकते हैं। And the best eyeliner for to make your eyes look bigger would be to go for nude eyeliner. Now Wet n Wild में एक shade है Call Me Your Buff. I think that retails for 135 rupees and I'm eyeing on that since a really long time, but वो out of stock रहता है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। वो भी आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाएंगी और अच्छी लगेंगी आपकी आंखें। ये था मेरा कलेक्शन आईलाइनर्स का और आईलाइनर्स के बारे में डिटेल्स। अगर मुझे ओवरऑल इनके बारे में अपने वो बताना है कि पर्सनल मेरे को कौन सा अच्छा लगता है, तो फर्स्ट आई ट्राई टू प्रेफर टू गो फॉर लिक्विड आईलाइनर्स, दे आर द बेस्ट। अगर आपको लाइनर्स लगाना आता है, आप विंग्स बना सकते हो, तो आपको डेफिनेटली लिक्विड आईलाइनर्स के साथ ही जाना चाहिए। एंड सेकेंड वुड बी दिस Yanqina Sketch eyeliner. I love this. ना इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा टाइटली अगर आप नहीं बंद करके रखते हो, थोड़ा सा भी ढक्कन खुला रह जाएगा, तो इट गेट्स ड्राइड रियली फास्ट। मेरे 2 Yanqina के स्केच लाइनर्स बिल्कुल ऐसे वेस्ट हो गए थे, नए के नए आए थे, मैं शायद उनको टाइटली बंद करना भूल गई थी, सो दैट्स व्हाई वो ड्राई हो गए। एंड सेम इज द केस विद दीज जेल पॉट लाइनर्स, ये भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आपको इनको ऐसे रखना चाहिए, ठीक है, कीप इट लाइक दिस। एंड हाँ, इसमें एक हैक है कि अगर ये कभी ड्राई हो जाता है तो आपको गर्म पानी में उल्टा करके ऐसे करके रख दो, तो ये फिर से काम करने लगेगा। आपको अपने काजल, पेंसिल्स और लाइनर्स को स्मच प्रूफ और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना के रखना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इनको पाउडर कर दो। अब जैसे आप अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उस पर फेस पाउडर लगाते हो, आपको सेम इन क्रीमी लाइनर्स को स्मच प्रूफ रखने के लिए भी इन पे पाउडर लगाना होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपके कलर का लाइनर है उसे सेम कलर का आप आई शेडो ले लो, स्मजर ब्रश से थोड़ा सा उसके ऊपर पैड कर दो, थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, तो उससे आपका आईलाइनर होल डे लास्ट करेगा। And these were all the gyans and all the tips I had to give all of you girls. बहुत मैं भी खरीदने जाती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा लाइनर एक्चुअली लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। So I hope that this video will actually help you to understand that which kind of liners you should buy, you should get for yourself. And yeah, that's too much of ज्ञान for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ यूनिक लगी हो, देन प्लीज मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, आप उन्हें डेली यूज में कौन सा यूज करते हैं। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।